Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to speech processing. So we'll be continuing our discussion from the point where we left it off last time when we were talking about the naive Bayes classifier. और last time आपको याद होगा कि we looked into quite a lot of detail कि किस तरह से using naive Bayes we can very easily perform certain classification tasks. Naive Bayes is a uniquely powerful classifier in many senses. इसकी training बहुत simple है. It's simple counts. आपको counting करके निकालना होता है. And I'm talking about just the plain old naive Bayes at this point. There is another flavor of it which is known as the Gaussian naive Bayes और उसकी भी आगे जाकर थोड़ी बहुत बात होगी जब हम HMMs कर रहे होंगे. But for now, अगर आपको याद हो जहाँ बात ख़त्म हुई थी वो ये यहाँ पर थी कि हमने zeros का problem solve quote unquote कर लिया था. So we came up with ways of estimating the probabilities from a bit lesser accurate using some less than accurate assumptions. So those assumptions might be true in certain situations. However, usually those assumptions are not completely true and the assumptions were of independence. और उसकी बात अब हम मुकम्मल करते हैं. So let's begin. So we have already seen the naive Bayes algorithm in action. We have seen this classifier work. We have seen how it gives us values of spam and not spam labels for email inputs. So now let's look at those assumptions because of which we call it naive. Bhola, bhala, sada ya masoom jo hum isko kehte hain. What are those assumptions? So the naive assumptions of the naive Bayes classifier are around the calculation of the maximum a posteriori probability. If you remember, we saw that using the Bayes theorem, we can calculate the maximum a posteriori probability of a particular class. So like the class that wins across the different classes and gives out the best probability estimates using this expression. So how do you calculate this probability of x1, x2, x3, xn, which are your features? In our case, we directly went ahead. So when we use the naive Bayes classifier, we assumed that x1, x2, x3, and x4 are unrelated with each other, and that was actually the implicit assumption. So because if we calculate these regarding their complete relationships with each other, which means कि ये words की positions भी matter करेंगी और इनकी probabilities भी एक दूसरे से independent नहीं होंगी बल्कि ये dependent events होंगे. So occurrence of the and let's say I don't know game. So the game के अंदर the और game की जो occurrence की probability है वो एक दूसरे से independent नहीं है. the के आने के बाद जो possible words अब रह गए हैं जो इस context में आ सकते हैं जिसको the ने establish कर दिया है उनमें अब different words की so you have a probability distribution which is given the previous word and so on and so forth. So words impact कर रहे हैं अपने around occur होने वाली words की probabilities को. However, this makes the calculation of these probabilities difficult because you would then need to look at every possible set of words and every possible set of positions. So for example, using the chain rule for given positions and word features, अगर हम इस चीज़ की probability निकाल रहे होते और ये बात हम बहुत तफसील से इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं तो then we would need to look like calculate these probabilities from this whole chain rule. और यहाँ पर अभी हम सिर्फ positions देख रहे हैं और एक खाली जो है वो तरतीब में इनकी positions को हम देख रहे हैं, right? So इनकी positions भी और इनकी probabilities की जो आपस में correlation है ये सारी चीज़ें इस estimation को बहुत मुश्किल बना देती हैं. And this can only be estimated if you have a very large number of training examples, a huge corpus जिसके अंदर आपके पास ये बड़े बड़े sentences हों. और even then we saw as an earlier example कि even internet के ऊपर using the internet as a corpus and obviously with the caveats that we had with that example, थोड़ा सा लंबा sentence और थोड़ा सा नया किस्म का थोड़ा सा क्रिएटिव सेंटेंस हमने क्रिएट किया था और वो गूगल के ऊपर भी हमें सर्च के अंदर नहीं मिला था. So naive Bayes to solve these two problems makes two simplifying assumptions. So the first assumption of the naive Bayes classifier is of the conditional independence, which is the assumption which is known as the naive Bayes assumption. This is the naive assumption that you often refer to when we say that okay, it's a naive Bayes classifier, so it makes an assumption. That's the first of those two assumptions, which is the conditional independence assumption. So here you assume that the feature probabilities xi class J are independent given the class C. So this is not
independence in general. It is independence given the class C. So if you remember, we talked about independence. We also briefly talked about conditional independence. That's what it's assuming here. So for example, a fruit is an apple if it is red, round, and about 10 centimeters in diameter. So let's assume these characteristics of a fruit, and let's assume these to be the features: the color, the shape, and the size. But a naive Bayes classifier would consider each of these features to contribute independently to the probability that this fruit is an apple, regardless of any possible correlations between the color, roundness, and diameter features. So ये यानी obviously we know that there are correlations. The size is correlated with the shape in this case. The bigger an apple, maybe its shape is less round, and it's maybe longer, or it may be elongated, or pear-shaped, and so on and so forth. And similarly, the color might also be correlated with the size. When as the apple matures, it becomes bigger, it's more likely to have a shade of, I don't know, red, or a shade of yellow, as compared to when it is a small apple, it might be green. So those are real correlations, and in case of these three features, it will form a covariance matrix, where we can actually figure out how these features correlate with one another. However, the naive Bayes, this first conditional independence assumption is that none of these features are correlated with each other, and they are just independent. So you consider each of those features to contribute independently to the probability that this fruit is an apple. So that's the conditional independence assumption. The second assumption of the naive Bayes classifier is what we call the bag of words assumption. So the first one is conditional independence. The second one is bag of words, which means that position does not matter. So a word in any place in a document plays an equal role in the probability of that document being, let's say, spam or not spam. So for example, the probability of x1, x2, x3, xn given the class would simply be calculated as, so instead of, so this is the right way of calculating it that we saw: probability of x1 given class into probability of x2 given x1 given class into probability of x3 given x1 x2 given class, and so on and so forth. However, we estimated using this probability of x1 given class into probability of x2 given class into probability of x3 given class, and so on and so forth. So this is where you basically just ignored the position. So whether a word occurs at the beginning of a sentence, or middle of the sentence, or the end of the sentence. Usually this is not true. So again, this is an estimation. This makes it easy to calculate. However, it makes a lossy assumption. So if positions are all the word positions in the document, then the class naive Bayes is equal to argmax. C belongs to all classes, probability of C, and then you simply just multiply the probabilities of all words that is occurring at all the various positions. So instead of like assuming a dependence on the previous words, you're just assuming that any position is fine. You just want the bag of words. You just want the words as a set. You're just looking at the words as a set. So another important thing, whenever you're doing these calculations, whether it's naive Bayes या फिर आप जो है वो एक पूरे sentence की probability निकाल रहे हो, आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि these lead to very small numbers, because जब आप इतनी सारे probabilities को multiply करते हैं, because all probabilities are between 0 and 1, so जितनी multiplications होंगी उतना वो number छोटे से छोटा होता चला जाएगा, और आपको underflows आने लगते हैं. So it's like numbers आपके 0.000000000 and so on and so forth, 1 आखिर में जाकर कहीं आएगा उसके. So इस तरह के numbers बनने लगते हैं. So therefore हम आम तौर पर इससे बचने के लिए ये सारी कैलकुलेशंस लॉग डोमेन में करते हैं. उससे दो फायदे होते हैं. एक, हमें मल्टीप्लिकेशंस नहीं करनी पड़ती, वी सिंपली ऐड. और आप में से जो लोग बल्कि आप सारे के सारे किसी न किसी पॉइंट पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर या आप माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल्स को पढ़ कर आए हुए, एंड यू नो कि यूजुअली एडिशंस आर लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन, ऑल्दो दिस इज नॉट ट्रू एनी मोर फॉर द लेटेस्ट ऑफ प्रोसेसर्स जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशंस भी काफ़ी एफिशिएंट हो गई हैं. हाउएवर, यूजुअली इट्स ट्रू दैट एडिशंस आर सिंपलर. सो एक तो एडिशन आपको करनी पड़ती है, आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ती, और दूसरा उसके अंदर ये है कि बिकॉज आपने उसका लॉग ले लिया है तो अब अंडरफ्लोज जो हैं वो लेस लाइकली हैं. ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ों की वजह से वी प्रेफर टू डू ऑल ऑफ दीज कैलकुलेशंस इन द लॉग डोमेन. सो ये आपके पास इसी चीज़ का दूसरा फार्मूला आ गया है नाइव बेस का, जिसके अंदर अब हमने लॉग डोमेन के अंदर सब काम किया हुआ है. इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग यू जस्ट नाउ एडिंग. सो आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो समेशन से रिप्लेस हो गई.
ठीक है जी। इसी डिस्कशन के आगे एक और मौजू भी निकलता है कि नाइव बेस भी एक लीनियर क्लासिफायर है, बट खैर एनी हाउ उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमारा इस वक्त मौजू नहीं। This is how you should visualize the bag of words representation. So you have this body of text, and what the bag of words for unigrams says that just इन वर्ड्स को पकड़ें और इन्हें पकड़ के ब्रेक कर लें और ब्रेक करके एक बैग के अंदर डाल दें और हिला दें इनको, एंड नाउ जस्ट टेक देम आउट एंड काउंट देम। सो इट जो है वो कितनी दफ़ा आया, आई कितनी दफ़ा आया, द कितनी दफ़ा आया, टू कितनी दफ़ा आया, एंड कितनी दफ़ा आया, सो ऑन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द बैग ऑफ वर्ड्स। in more technically speaking, bag is basically a multi-set. So set के अंदर repetitions allowed नहीं होती. This is a multi-set where you can basically use it to find the frequencies of different words. इसी चीज़ को आप, इसी assumption को आप बायग्राम लेवल पर भी लगा सकते हैं, in which case जो है वो I love first बायग्राम होगा, love this second होगा, this movie third होगा, movie और exclamation mark अगला होगा, exclamation mark it's अगला होगा, and so on and so forth. So ये भी इस तरह से आप, we have already seen the diagrams और अभी हम उसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा और देखेंगे भी। Okay, let's conclude this discussion with one more example. You've already seen spam versus not spam, और अभी हमें machine learning सीखते हुए इस कोर्स में मेरे ख्याल में कोई 1.5-2 लेक्चर ही हुए हैं। I just want to show you कि how these extremely simple classifiers can basically do wonders when you're doing these tasks, or at least इनके जो एक जो इनिशियल 80-20 अगर मैं कहूँ आपके पास जो आ रहा है वो आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी देना शुरू कर देता है, अच्छे खासे रिजल्ट्स देने लगता है, एंड ऑब्वियसली देन यू ट्वीक इट टू द पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड देन इट इम्प्रूव्स। सो खैर हम सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे यूजिंग नाइव बेस एंड एडवांस स्मूथिंग। ठीक है, हमारा जो ट्रेनिंग कॉर्पस है उसके अंदर हमारे पास 5 टोटल इंस्टेंसेस हैं डॉक्यूमेंट्स के, ये मूवीज़ के रिव्यूज़ हैं, एंड यू हैव 3 negative sentiment reviews and 2 positive sentiment reviews. The negative ones are just plain boring, entirely predictable, and lacks energy, and no surprises and very few laughs. ये negative हैं, and very powerful, the most fun film of the summer, ये आपके पास positive हैं. And now if you look at the test sentence जिसका हमने label predict करना है, that is predictable with no fun. ठीक है, make sense? Now इस point के ऊपर क्या क्या चीज़ें हमने find out हमें करनी पड़ती हैं, पूरी की पूरी overall vocabulary. So if you just find out the vocabulary, the V turns out to be 20. The second thing that you need to figure out is the n, the number of tokens in each of the two classes. So इसके गालिबन 14 है और इसके 9 हैं, and you can count it for yourself. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, so tokens आपने दोनों साइड के n निकाल लिए, n of the positive and n of the negative. Now the first thing that you need to calculate is the priors. What's the probability of a negative sentiment document and what's the probability of a positive sentiment document? Now just like before, हम simple counting से ये काम करेंगे। हमारी पूरी corpus के अंदर 5 document हैं, 3 negative हैं, 2 positive हैं, so the probability of negative document is 3/5 and the probability of a positive encountering a positive document is 2/5. The next question is that we want to calculate the likelihoods. All right, so with का word हमारी पूरी की पूरी training corpus में कहीं नहीं आया, so ये हमारी vocabulary में शामिल नहीं था, it's an out of vocabulary word, so हमने drop कर दिया, जैसे हमने कहा था classification में हम आमतौर पे इनको drop कर देते हैं. And now we want to just calculate the likelihoods. So यहाँ पर आप देखें probability of predictable given negative. So negative के अंदर predictable की क्या probability है? Predictable एक दफ़ा आया है सिर्फ, so this is that one divided by n. So ये आपका n है, यानी ये 14 है, and then add 1 किया है आपने न्यूमरेटर के अंदर और फिर डिवाइड कर दिया है v के साथ, क्योंकि आपने टोटल v ones ऐड किए हैं इस क्लास के अंदर, सबको आपने एक एक की काउंट दे दिया है ना, वो सारे वर्ड जो कि नेगेटिव क्लास में नहीं थे उन सबको आपने 1 1 का काउंट एज्यूम करवा दिया. सो टू नॉर्मलाइज दैट हमने डिनोमिनेटर में भी 20 ऐड कर दिया, एंड द सेम गोज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन नेगेटिव एंड फन गिवन नेगेटिव. For the other class, for the positive class, you can see here कि हमारा predictable एक दफ़ा भी नहीं आया, so it's 0 plus 1 करने से ये हमारे पास add 1 हो गया, n का size यहाँ पर जो था वो 9 था, and then vocabulary v 20 थी. So you get all of these calculations, and now for your test corpus, all you need to do is you need to basically figure out the probability of negative and positive. So आपने predictable, no और fun की तीनों की यहाँ पर भी निकाल ली है और यहाँ पर भी probability निकाल ली है. You just plug it in and you figure out the overall probability of this sentence given negative, and it comes out to be this, and the probability of this sentence given positive, and this comes out to be this. So in fact what you're calculating is the probability of the
negative class given this sentence and the probability of the positive class given this sentence. और जिस तरह से आप निकाल रहे हैं वो ये prior or likelihood से आप इसको calculate कर रहे हैं and you calculated it to be these two numbers और इनमें से clearly जो पहला वाला है ये बड़ा है, so this sentence has a negative sentiment. ठीक है, I went quickly through this. I hope कि आपके लिए अब तक ये कोई मुश्किल नहीं होगा. एक सफ़े के अंदर we have done entire sentiment analysis. I think this is cool, right? So is this practical? Yes. Can you implement it? Of course. This is extremely simple. So you can just start implementing this, and you can use the same techniques for the first cut of almost all the simple classification tasks like authorship attribution or I don't know, spam hem. We've already done sentiment analysis, basic of emotion detection, and so on and so forth. So you can do all of those tasks now, and you can take your initial stab at them. So this is it. मतलब कुछ छुपा नहीं रहे हम आपसे, इतना ही है ये. इसके हम आखिर में आपको ये नहीं बताएंगे कि ये चलेगा नहीं. It will work. However, it will not be the most accurate of classifiers, but obviously if you have a big enough corpus and if you handle for other problems जो कि machine learning में आगे जाकर हम देखेंगे, आपके results काफ़ी अच्छे भी इससे हो सकते हैं. All right जी. So now we are ready to return to our discussion of sequences. अब हम नाइव बेस को पढ़ा है, अब हमने स्मूथिंग होती भी देख ली, एक दफ़ा पूरी कैलकुलेशन हाथ से करनी, तो अब हमारे लिए कोई बात कंफ्यूजिंग होगी नहीं. So मेरी कोशिश ये होगी कि I'll be a little bit quick now, और अब इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं और इसके जो रिमेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं उनको देखते हैं. Okay, so just to make completely sure that you understand how to calculate these probabilities by yourself, let's go through this exercise of calculating these probabilities. I have appended here start of sentence and end of sentence markers. These are typically not required when you're doing 1 gram probabilities. So for the first exercise, we'll just quickly find all the 1 grams in this. So these start of sentence and end of sentence markers are required starting from bigrams onwards, because in 1 grams there is no context, there is no concept of a context, so therefore you don't need the start of sentence and end of sentence. Just इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में कभी ये कोई आप कहीं पूछा जाए तो इसमें गलती आपको ना हो कि जी सर ने भी जब करवाया था तो उन्होंने स्टार्ट ऑफ सेंटेंस एंड ऑफ सेंटेंस लगाए हुए थे. जस्ट यूज देम, ये कॉर्पस इस तरह से थी, मैंने इसको इसी तरह यूज कर लिया, बट फॉर 1 grams you don't need them. ऑल राइट, किस तरह निकलेंगी इनकी 1 grams या यूनिग्राम्स? ये आपके पास फर्स्ट आ गया, ये इसका काउंट 1 है, फिर आई आ गया, एम आ गया, सैम आ गया, एंड ऑफ सेंटेंस आ गया, फिर उसके बाद स्टार्ट ऑफ सेंटेंस के काउंट 2, सैम आ गया, और उसके बाद you'll keep doing that until you reach the end of this. So you get this whole table. You have now all of the counts. So I का count, Sam का count, M का count, and so on and so forth. This is the total count of all of the. So what are these types of tokens? So these are all of your tokens, right? So this is n. And the sum of these things, the sum of these unique ones, if you just count them up, so this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is your V, at least for this set. So that is 12. Got it? And now you just calculate these probabilities. And how do you calculate these probabilities? So you just do a 3 over 20 here, and you get 0.15, and then you get a 2 over 20, 2 over 20, which is 1 over 10, which is your 0.1, and so on and so forth. So you calculate these probabilities, and these are your 1 gram or your unigram probabilities. All right. Now moving on to bigrams. So if you want to calculate the bigrams for this, instead of going single word by single word, we'll be going on the basis of 2 words. Now at this point, we do need the start of sentence and end of sentence markers. And the reason is that if we do not have these markers, then we already know that because longer sequences have lower probabilities, because as you keep multiplying probabilities, and each probability is a number between 0 and 1, as we already discussed, the products keep becoming smaller and smaller. So as a result, अगर आपके पास 2 sentences compare हो रहे हैं, एक है I saw the, और ये start ये आपका जो है वो ये जो शुरू में है वो लगा हुआ ना star, इसका मतलब होता है incorrect या ungrammatical. So ये I saw the को अगर आप compare कर रहे हैं I saw the red house, तो इन दोनों की probability में से ये पहले वाले की ज़्यादा होगी, although कि ungrammatical है.
लेकिन अगर एंड ऑफ सेंटेंस मार्कर लगे होंगे तो देयर इज एटलीस्ट समथिंग इंश्योरिंग कि ये पता लग जाए कि कौन इस चीज़ का भी इम्पैक्ट आ जाए कि स्टार्ट ऑफ सेंटेंस और एंड ऑफ सेंटेंस के ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा प्रोबेबल है, क्या चीज़ कम है. So therefore, when as soon as the context is being discussed, which is bigrams and onwards for higher order n-grams, we start using the start of sentence and end of sentence markers. For bigrams, we just use a single start of sentence and end of sentence marker for each sentence. For trigrams, we use a pair of start of sentence and a pair of end of sentence markers, so that कि हम जो first word है उसकी भी probability at the start of a sentence देख सकें. ठीक है. Bigrams के लिए किस तरह से होगा? You get start of sentence and I, one है, I and M, one है, M and Sam, one है, and you'll keep doing that until you calculate the whole table. All right. So, all right. So this is the trigram case. Again, यहाँ पर हमने corpus को standard use किया है, इसको append नहीं किया हुआ. मैंने तीनों examples unigram, bigram, trigram में same corpus use किया है, उसमें additional चीजें append नहीं की हुई. However, when you want to do it right, for unigram case, you don't have the start of sentence and end of sentence markers. For bigram case, you do need a single start of sentence and a single end of sentence marker. And for trigram case, you need a pair of start of sentence and a pair of end of sentence markers. So there would be an additional marker here, and there would be an additional marker here for each sentence. All right. So ये असल में इस तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको एक दफ़ा ये tables नज़र आ जाएं कि calculations किस तरह होती हैं. And you can see here the tables. ये आपके पास सारे counts निकले हुए हैं जो ये black में corpus दी हुई है इसके. And then how do you basically estimate the probabilities? So this is 1 divided by count of these two things, right? So this comes out to be 0.5, and then same goes for the next ones. And this is how you calculate the trigram probabilities. All right, so we have been using relative frequencies to estimate the probabilities, and this is an example of maximum likelihood estimation, which we have already now seen in some detail. In MLE, the resulting parameter set maximizes the probability or the likelihood of the training set T given the model M. That is the probability of training set given the model जो हम train कर रहे हैं. तो ये बात हमने इससे पहले भी की थी कि इससे एक बहुत strong dependence create हो जाती है आपके model की आपके training data के ऊपर, which could lead to some interesting outcomes जिसकी हम अब थोड़ी सी बात करते हैं. So suppose आपके पास एक corpus है जिसके अंदर एक word Chinese जो है वो 400 times आया, and it's a 1 million word corpus. ठीक है. So in this 1 million word corpus, you have the word Chinese occurring 400 times. So what is the probability that a random word selected from some other text of a million words will be the word Chinese? So that's actually, you really need to think about this question. एक आपके पास किसी corpus के अंदर से आपने ये निकाल लिया, इससे आपकी probability of the occurrence of the word Chinese, the unigram probability, comes out to be 400 over 1 million. Now, could this be used to estimate the probability of Chinese in a different text? वो टेक्स्ट हो सकता है किसी और जबान का हो. चलें फर्ज करते हैं जबान को भी सेम कर देते हैं, हम कहते हैं वो भी इंग्लिश का टेक्स्ट है. तो क्या अब प्रोबेबिलिटी उसमें चाइनीज की इतनी ही होगी? प्रॉब्ली नॉट, बिकॉज एक टेक्स्ट हो सकता है जो यहाँ पर है, ये एक ऐसी कॉर्पस से बना हुआ है जहाँ पे लोग खाना ऑर्डर करते हैं और वहाँ पर चाइनीज आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है. एक और है वो जियोग्राफिकल टेक्स्ट है, उसमें चाइनीज का वर्ड आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है. एक और है जो एक साइंटिफिक टेक्स्ट है, उसमें वर्ड चाइनीज आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है. एक स्पोर्ट्स का टेक्स्ट है, उसमें चाइनीज वर्ड आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर ट्रेनिंग इस 1 मिलियन वर्ड के कॉर्पस पे की है तो जो टेस्टिंग या जो इसका फाइनल आउटकम है जहां इसने यूज होना है उसमें भी उसी किस्म के वर्ड्स आने और उसी किस्म के सेंटेंसेस आने प्रोबेबल होने चाहिए. इसको हम ये कहते हैं कि योर डिस्ट्रीब्यूशन P जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं, there is this underlying distribution P of the occurrence of every word in your vocabulary in a particular genre. आप जिस distribution तक पहुंचना चाहते हैं, जिसे आप estimate करना चाह रहे हैं, जिस training data से उसको estimate कर रहे हैं, उसी तरह का ही आपका test data होना चाहिए, because you're not estimating the true probability distribution, you're not finding the true probability distribution, you're just estimating the probability distribution. तो ये there is a strong reliance of these models on the ट्रेनिंग डेटा. बिल्कुल वैसे ये जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि जाइए जाकर अपने सारी कोर्स बुक्स जितनी कंप्यूटर साइंस की हैं उसका टेक्स्ट पकड़ें और उसके ऊपर एक यूनिग्राम मॉडल ट्रेन कर लें. और अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अब आप जाकर अपनी सारी आर्ट्स की बुक्स जितनी थी, लेट्स से अंग्रेजी जबान लिटरेचर की जितनी बुक्स थी, उसमें उस वर्ड की प्रोबेबिलिटी उस साइंटिफिक टेक्स्ट की बेस पे आप प्रेडिक्ट करें, इट विल फेल, एंड इट विल फेल मिजरेबली.
So the MLE estimate for this probability is 0.0004, but this is not the best possible estimate of the probability of Chinese occurring in all situations, right? It might turn out that in some other corpus, the context Chinese is a very unlikely word, or a much more likely word. But it is the probability जो यहाँ पर मिल रही है which maximizes the likelihood of our training set, according to which Chinese will occur 400 times in a million word corpus. तो आपकी ये जो relative frequency based maximum likelihood estimation है, ये likelihood सिर्फ maximize कर रही है आपके training data का, राइट और ये बात आपने जहन में रखनी है. दिस हैज इंपॉर्टेंट आउटकम. सो आपको जो सिंपल बाईग्राम यूनिग्राम जो एस्टिमेट्स हैं ये आपके सिर्फ ट्रेनिंग डेटा के प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं. हाँ, जब हम इनको स्मूथ कर देते हैं, जब हम लेट्स से एड वन स्मूथिंग लगा देते हैं, तो नाउ इट्स नो लॉन्गर an estimate which is just maximizing the likelihood of the training set. It's now a smoothed model which has generalization applied to it. अब ये बेहतर जनरलाइज कर सकता है टू न्यू डेटा जिसके ऊपर जो है वो हम इसको चला रहे हैं. So smoothing is generalization and hence it is not MLE. So let's take a concrete example. This is from your book. By the way, you should be reading your book for this, chapter 3 in the Jurafsky-Martin book. और बहुत अच्छी तरह से ये सब चीज़ें वहाँ explain हुई हैं. So Berkeley Restaurant Project essentially 1990s में ये project run हुआ था. I think it was a dialogue system where people used to inquire about restaurants के खाना फलां किस्म का चाहिए कहाँ से मिलेगा. Here are some example sentences from it. जो जिसमें can you tell me about any good Cantonese restaurants close by? Mid-price Thai food is what I'm looking for. I'm looking for a good place to eat breakfast and so on and so forth. So इस किस्म के sentences हैं जिसके ऊपर हम अब आगे अपना different models की training दिखाएंगे. And I'll be showing you just snippets जैसे कि आपकी book में है. These diagrams will be from the book जिससे हमने कुछ important चीज़ों को ज़रा समझना है. So here are raw bigram counts that you see. So left के ऊपर जो आपको column नजर आ रहा है ये bigram का पहला word समझें और ये जो right के ऊपर आपको जो ऊपर जो top row नजर आ रही है इसको आप इस bigram का second word समझें. So this means an I after an I. This means the count of I want and so on and so forth. ठीक है. So now you can see here कि हमारे पास कुछ काउंट्स हैं जो वो जो एक्चुअल नंबर्स हैं और बाकी जो है वो जीरोस हैं. एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट ये नोट करें कि दिस इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इंटायर कॉर्पस बिकॉज ये आप देख सकते हैं कि आई वांट टू ईट चाइनीज फूड लंच स्पेंड ये मिलते जुलते वर्ड्स दोनों तरफ इन्होंने रखे हुए हैं. सो ताकि जो है वो आपको ऐसा ना हो कि सारे जीरो मिल रहे हो. इफ़ यू लुक एट द होल बायोग्राम टेबल तो ज़्यादातर उसमें एंट्रीज जो है वो जीरो होंगी. ठीक है. सो द बायोग्राम काउंट्स फॉर 8 वर्ड्स हैं दोनों साइड्स पे. यहाँ पे वोकैबुलरी आपकी जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की थी वो 1446 थी और इसके अंदर 9332 सेंटेंसेस थे. ठीक है. जीरो काउंट्स आपको ग्रे में नजर आ रहे हैं. सो यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा स्पार्सिटी हियर बट वांट टू काफ़ी हाई है, टू ईट काफ़ी हाई है, ईट चाइनीज and then you hear Chinese food and you can see here to spend and this is eat lunch. ये वो हैं जो जिनकी high numbers आ रहे हैं. I just want to look at a few examples. And then if we look at a few zeros, want is 0 and 2 is 4, which most probably is either the way they're speaking, which is like an ungrammatical way in this case, or it might be just कि जो है वो गलती से ये चीज़ बोली हुई है या कही हुई है. Eat is 0, Chinese is 0 and so on and so forth. Alright, so these are raw bigram counts and this is just a portion of the entire huge table which would be 1446 by 1446. So this is just a very small portion of that. Alright. यहाँ पर हमने raw bigram probabilities निकाली हैं. So all we have done is that we have normalized these by the unigrams because अगर आपने I की probability निकालनी है तो ये count of I होगा divided by count of I होगा the first वाला. या I want की निकालनी है तो ये I want के count divided by I का count होगा, right? So you need these unigram counts and you find this matrix and you see that there are a lot of these blue zeros. So again इसकी base के ऊपर अगर आप कोई calculation करेंगे तो वो बहुत अच्छी शायद ना हो सके और ज़्यादातर आंसर 0 आए. And again you can do the add one smoothing जिसको अभी हम quickly देखते हैं.
ऑल राइट, ये एक सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है। सो कुछ प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं जिसकी हमें इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए जरूरत होगी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ आई वांट इंग्लिश फूड इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ आई गिवन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वांट गिवन आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश गिवन वांट। हम बायग्राम्स यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फूड गिवन इंग्लिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड ऑफ सेंटेंस गिवन फूड, एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.000031. So that's now the probability of this sentence based on this corpus. ऑल राइट, ये कॉर्पोरा या ये बायोग्राम्स किस किस्म के नॉलेज को इनकोड करते हैं, ये मॉडल्स जो अभी जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश गिवन वांट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइनीज गिवन वांट, इनमें बहुत डिफरेंस है, एक ज़्यादा है और एक कम है। नाउ दिस इज़ मोस्टली अ जियोग्राफिकल और कल्चरल नॉलेज, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग कॉर्पस जो है उसमें ऐसी जगह पर ये ट्रेनिंग हुई है जहाँ पर वो फूड को चाइनीज़ फूड कह रहे हैं। अब चाइना में फूड को चाइनीज़ फूड नहीं कहा जाएगा, चाइना में फूड को फूड कहा जाएगा। तो ऑब्वियसली इट्स इन अ नॉन चाइना कंट्री वेयर यू आर रेफरिंग टू फूड, और इस वजह से हम उस फूड को जो है वो वहाँ पर लोगों ने ये टर्म चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा यूज़ की और वो उस कॉर्पस में आ गई। अगर ये कॉर्पस किसी और मुल्क में बनता तो हो सकता है कि उसमें ये वाला वर्ड उतनी दफ़ा ना आ रहा होता। सो दिस इज़ लाइक योर कल्चरल नॉलेज जो आपके ट्रेनिंग कॉर्पस से आ रहा है, जो इन प्रोबेबिलिटीज़ में इनकोड हुआ है। सिमिलरली इन दो एग्जांपल्स को देखें, टू फूड और टू ईट इज हाई एंड टू फूड इज जीरो, बिकॉज इट्स अनग्रामेटिकल। सो टू के बाद वर्ब आना यूजुअली ज्यादा प्रोबेबल है। सो दिस इज लाइक योर सिंटैक्टिक नॉलेज, द नॉलेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। Similarly, probability of I given the start of sentence is very very high, which means that this is a highly probable word at the start of a sentence. Again, this is knowledge of the syntax of a particular language. And then you also see some other examples here. Spend want is 0, but want to is 0.66. So again, grammatical knowledge which is being which is being encoded here कि किस किस्म के words के pairs probable हैं इस language के अंदर। All right, अब वही वाली बात कि जब हम इन probabilities को multiply करते हैं तो हमारे underflows होना बड़ा quickly मुमकिन होता है, because these become small really quickly. So we do everything in log space. So this avoids the underflow, and this also allows us to use addition instead of multiplication, as we already discussed. So we do everything, all of these calculations, whenever we implement them, we do it in the log domain. Alright, so as we have already discussed, the n-grams are very specifically trained on a particular training corpus, and therefore they're very sensitive to the corpus that they have been trained on. Now the problem is that how would you then figure out or quantify or measure if your model is ready for prediction beyond the training corpus? So obviously हम इसलिए तो ट्रेन नहीं करते कि हम खाली जिस चीज़ पे ट्रेन कर रहे हैं उसी पे टेस्ट करें। ऑब्वियसली डेटा उसी सोर्स से आ रहा होगा या मिलते जुलते सोर्सेज से आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्पोर्ट्स की आई डोंट नो लिटरेचर के ऊपर डेटा अपने मॉडल को ट्रेन किया है, तो आप स्पोर्ट्स ही के लिटरेचर के ऊपर जो है वो आप उसको टेस्ट कर रहे होंगे। या लेट्स अज्यूम आपका जो सोर्स था वो ईमेल्स थी फॉर एग्जांपल, जिसके ऊपर आपने ट्रेन किया था, और ईमेल्स के ऊपर ही आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आप ईमेल्स पे ट्रेन कर रहे हैं और लेट्स से आप लिटरेरी बुक्स के ऊपर जो है वो उसको टेस्ट कर रहे हैं। दैट वुड बी अ बैड यूज ऑफ योर मशीन लर्निंग, एंड इट वोंट जनरलाइज. But how would you measure a particular model's capabilities of generalizing to unseen data, of generalizing to new data? Um, so the implications of the high dependence of these models on the training corpus is that the probabilities which they encode, which the language models encode, they are about very specific facts about a given training corpus. जैसे अभी हमने देखा कि वो जिस जगह पर वो रेस्टोरेंट कॉर्पस बनी थी उस जगह के एतबार से उसमें लिंग्विस्टिक फीचर्स भी थे, उसके अंदर वहाँ का यूज़ ऑफ इंग्लिश में जो चीज़ सही और गलत समझी जाती थी उसके बारे में फैक्ट्स भी उसके अंदर इनकोड हुए हुए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो एंड द सेकंड थिंग इज दैट अगर आप उसी डेटा सेट को बड़े से बड़ा करते चले जाएं तो आपका जो एरर है उस तरह की चीज़ों के ऊपर, उससे बहुत मिलती जुलती चीज़ों के ऊपर, वो कम से कम होता जाएगा. सो अगर मैं फ़र्ज़ करें थोड़ी देर को एज्यूम कर लूँ कि मैं जिस चीज़ के ऊपर ट्रेन कर रहा हूँ उसी चीज़ पे टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा एरर अगर मैं इसको बढ़ाता चला जाऊँगा इस डेटा सेट को जिस पे ट्रेन कर रहा हूँ, विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ योर एन, द नंबर ऑफ टोकन्स, हमारा एरर कम से कम होता चला जाएगा. And that could be a big problem. Why? Because जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग डेटा पे आपका एरर कम होता जा रहा है वैसे वैसे नए डेटा के ऊपर हो सकता है कि आपका एरर बढ़ना शुरू हो जाए. And that's a very important point that we need to understand about machine learning and machine learning models.
that there is a tendency of overfitting that these models have, and certain models are more prone to overfitting than others. Again, इस कोर्स में हम बहुत ज़्यादा तफसील से इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे. दिस इज़ अ टॉपिक फॉर द कोर्स ऑफ मशीन लर्निंग, जहाँ हम बहुत डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं. बट जस्ट इन 2 slides I want to give you at least the some insight into this bias variance trade-off and this over and underfitting problem that we encounter, and how do we attempt to solve this problem, or at least reduce this problem. So, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम कभी भी जब अपने मॉडल्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो हम एक चीज़ को मेक श्योर करते हैं, एंड वी नीड टू एब्सोल्युटली ensure that this is happening. The probabilities of your n-gram are coming from a training corpus. So you take your data, whatever data you have, जिसके ऊपर आपने अपने सिस्टम को ट्रेन करना है, and you divide it into, और मैं पहले simplify करके बात करता हूँ, and then I'll make it more detailed. You divide it into 2 parts. You have your training data and you have your test data. And you should think of the test data as something that you do not have. You won't even look at it. So you separated out the test data, और आप literally यूँ समझ लें कि आपने ज़मीन खोद कर उसको गाड़ दिया. अब आपने उसको दोबारा यूज़ नहीं करना. अब आप अपने खाली ट्रेनिंग डेटा को पकड़ेंगे, आपका है. अब आप इसके साथ जो चाहे करना चाहते हैं इसको करें. इसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, इसमें से कुछ हिस्से पे ट्रेन करें, इसी के ऊपर टेस्ट करें, अब इसी को ट्वीक करें, बेहतर करें, पैरामीटर्स को ट्रेन करें, सब कुछ करें. ये आपका डेटा है. When you are done, then dig out that test data just once, और इस फाइनल मॉडल को जो आपका सबसे बेस्ट बना है इसको उस टेस्ट डेटा के ऊपर चला लें, and you're done. This is good machine learning. However, अगर आप ये कर रहे हैं, so पहली चीज़, ये वाली रुकी मिस्टेक तो शायद अब बहुत कम होती है. And let me just bring up a little bit of more slide. ये जो पॉइंट है कि आपका ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा मस्ट बी सेपरेट, ये तो अब हम में से बहुत लोग समझ गए और हम ख्याल रखने लगे हैं इस चीज़ का कि ऑब्वियसली जिस पे आप ट्रेन कर रहे हैं उसी पर अगर आप टेस्ट करते हैं, ये समझते हुए, ये एज्यूम करते हुए कि ये रिजल्ट्स जो आएंगे ये समहाउ मेरे मॉडल की कैपेबिलिटीज शो कर रहे होंगे ऑफ जनरलाइजेबिलिटी एंड जनरलाइजिंग टू न्यू डेटा, तो देन यू वेरी रॉन्ग. एंड इफ यू रिपोर्ट सच रिजल्ट्स एनीवेयर विदाउट मेंशनिंग कि मैंने जिस पे ट्रेन किया था उस पर टेस्ट किया, इफ यू रिपोर्ट दीज रिजल्ट्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्रिमिनल. तो मशीन लर्निंग में दिस इज लाइक अ कार्डिनल सिन. क्या आपने जिस चीज़ पे ट्रेन किया उसी पे टेस्ट किया और बाद में ये कहा कि मेरे मॉडल की एक्यूरेसी इतनी है विदाउट मेंशनिंग कि ये नए डेटा के ऊपर टेस्ट नहीं हो रहा. तो दैट्स लाइक अ मेजर सिन इन मशीन लर्निंग. ये तो खैर हमें पता ही है. जो बात हमें नहीं पता वो इसकी ये इम्प्लिसिट फॉर्म नहीं पता. समटाइम्स व्हाट वी डू इज वी टेक आवर डेटा, वी डिवाइड इट इनटू 2 parts, ट्रेनिंग एंड टेस्ट. वी ट्रेन ऑन द ट्रेनिंग पार्ट, वी टेक द टेस्ट डेटा, और उसके ऊपर हमने लेट्स से इसकी परफॉर्मेंस निकाली, जो कुछ भी एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल या F1, जो कुछ भी आप निकाल रहे हैं, निकाला, रिजल्ट आया. आपने कहा अच्छा ये रिजल्ट अभी इतने अच्छे नहीं. वापस मॉडल के पास गए, कुछ उसके पैरामीटर्स ट्वीक किए, कुछ उसको थोड़ा सा बदला, उसे बेहतर किया, फिर रन करके वापस लाए और फिर टेस्ट डेटा पे टेस्ट किया. अब रिजल्ट कुछ बेहतर हुए. आप ये करते चले गए, ये आप करते करते यहाँ तक कि आपके टेस्ट डेटा पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे. एंड नाउ यू कम टू मी एंड यू टेल मी कि you have trained your machine learning model on a data which was non-overlapping with the test data, and this is your final accuracy. This is not right. This is not right, because you clearly tweaked your parameters according to the test data. It was separate in the beginning, but you continuously used it again and again, and it was a part of the training process. अच्छा, अब आप ये अगर कहें कि जी why this rigidity, इसकी क्या जरूरत, इसमें क्या मसला. इसमें मसला ये है कि what if I give you new data now, would your model perform equally well on the new data which belongs to it, which is coming from a similar distribution. emails थी तो emails ही मैं आपको और दूं अगर let's say sentiment analysis के लिए, would it work equally well? If it will, then everything is fine, but it won't, because आपका जो टेस्ट डेटा था वो ट्रेनिंग का हिस्सा था. आपके मॉडल के बारे में आप ये नहीं जानते कि वो नए और अनसीन डेटा पर कैसे परफॉर्म करेगा. ये लॉजिक है, ये फलसफा है इस चीज़ के पीछे कि हम टेस्ट डेटा को शुरू में अलग कर देते हैं और अलग रख देते हैं, उसका हमसे कोई वास्ता ही नहीं है. वो उस शख्स को दें ही ना जो मॉडल को ट्रेन कर रहा है, अपने पास रखें. एंड नाउ व्हेन दे आर डन और वो आपके पास फाइनल मॉडल लाएं, तो अब उसको टेस्ट डेटा पर चलाने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि दिस टेस्ट डेटा इज नाउ काइंड ऑफ सिमुलेटिंग न्यू डेटा फॉर यू, क्योंकि और हम कहाँ से अब नया डेटा फील्ड में से लेकर आए. तो मेरे पास 1000 ईमेल्स थी, मैंने 800 आपको दी, आपने उसके ऊपर ट्रेन किया अपना सेंटिमेंट एनालाइजर या स्पैम फिल्टर, और फिर उसके बाद जो 200 ईमेल्स मेरे पास 1000 में से पड़ी हुई थी वो मैंने आपको दी और कहा इस पर टेस्ट करो. जो आपके रिजल्ट्स आएंगे ऐसे ही रिजल्ट्स तकरीबन आपके किसी नई ईमेल्स के ऊपर आएंगे. That's the logic behind dividing your data set into training and test.
अब जब टेस्ट तो आपका है ही नहीं, वो तो आपने डे 1 से अलग कर दिया, तो अब आपके पास रह गया खाली ट्रेनिंग डेटा। तो देन हाउ वुड वी बेसिकली यूज a part of this data for improving the parameters of the machine learning model? हाँ, उसके लिए हम अपने ट्रेनिंग डेटा को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और एक को हम हेल्ड आउट डेटा या उसको हम एक दूसरा नाम वैलिडेशन सेट कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं। So normally we take a corpus and divide it into three portions. You have your 80% training data, you have 20% held out data, जिसमें से 10% को आप development data या आप उसको validation data कह लें, वो बना लेते हैं। तो आपने कहीं कोई weights train करने हैं, कुछ और चीज़ें करनी है, कोई hyperparameter training करनी है, and so on and so forth. एंड देन ये 10% डेटा तकरीबन ये आपने साइड पर रख दिया, जिसको अब आपने बिल्कुल टच नहीं करना ट्रेनिंग के दौरान, यहाँ तक कि आप कहें कि अभी मेरा फाइनल मॉडल है, मैंने एक दफ़ा चलाना है बस, दोबारा यू वोंट गेट अ सेकंड चांस। ये आपको फाइनल, ये आपका टेस्ट डेटा है। सो इसमें से ये 80% और ये 10% is kosher for you. You can use it throughout the training process as frequently as you want to. You can look at it, learn from it, tweak your models to it. Everything's fine. But we will evaluate you only on the test data. आपके मॉडल की अनसीन डेटा के ऊपर जो परफॉर्मेंस है, असल परफॉर्मेंस तो वही है। क्यों? क्योंकि इन दी एंड आपका स्पैम फिल्टर या आपका सेंटिमेंट एनालाइजर एक रियल वर्ल्ड सिनारियो में चलेगा, एंड दैट्स द रियल टेस्ट ऑफ इट। आपका स्पीच रिकग्नाइजर एक रियल वर्ल्ड सिनारियो में चलेगा, एंड दैट्स द ओनली रियल टेस्ट ऑफ इट। बाकी तो सब की सब इन लैब बातें हैं। तो उस रियल वर्ल्ड सिनारियो को सिमुलेट करने के लिए वी यूज दिस नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट डेटा। अब इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं, यहाँ से आगे ये मौजूद तो इतना बड़ा है कि इस पे 2-3 लेक्चर्स हम बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी वोंट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स। सो ये जो टेस्ट डेटा आपने बनाया है, या तो आप ये रैंडमली सिलेक्टेड स्ट्राइप्स ले लेते हैं और थ्रू आउट आपके पास बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है या 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उनको जोड़ के, या लेट्स से 1000 ईमेल्स हैं, तो अब आपने उसमें से रैंडमली पहली 50 उठा ली, फिर दरमियान में से 50 उठा ली, कहीं आखिर में से फिर आगे से थोड़ी 50 उठाई, एंड में से 50 उठाई, सो इस तरह से बना लें। या फिर जो है वो आप ये भी कर सकते हैं कि आप, so there are other methods जिसकी अभी हम बात करेंगे, जहाँ पे you can basically change your test data throughout this whole process, still guaranteeing that you're not tweaking to your test data. तो ये भी एक तरीका है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और इसकी भी कई वेरिएशंस हैं आगे। तो ये मैं अभी थोड़ी सी इस चीज़ की बात करता हूँ कि you can still do stuff which can ensure that although you'll be testing on the test data multiple times, but every time the test data would be separate, would be a different data, not the same test data. ये भी इस चीज़ की बात हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा जनाब, तो अब पहले प्रॉब्लम की बात कर लें। इस प्रिडिक्शन का जो ये हमारा पूरा काम है जो हम करने लगे हैं, इसका गोल ये है कि हम अपने मॉडल की एबिलिटी को टू प्रिडिक्ट न्यू डेटा दैट वाज नॉट यूज्ड इन एस्टिमेटिंग दीज प्रोबेबिलिटीज, ऐसे डेटा के ऊपर इसको टेस्ट करें और इसकी प्रिडिक्शन की कैपेबिलिटी देखें। लेट्स से आप वर्ड प्रिडिक्टर बना रहे हैं या स्पेल चेकर बना रहे हैं, जो कुछ भी है, एंड देन यू शुड फ्लैग प्रॉब्लम्स लाइक ओवरफिटिंग and selection bias. So overfitting क्या होती है? The production of an analysis that corresponds too closely or exactly to a particular set of data and may therefore fail to fit additional data or predict future observations reliably. What this simply means is कि आपने अपने मॉडल को इतना perfectly अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर फिट कर दिया है कि ट्रेनिंग डेटा के ऊपर तो उसका एरर बहुत कम है, लेकिन न्यू डेटा के ऊपर उसका एरर बहुत ज़्यादा है, और न्यू डेटा के ऊपर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत वेरी करती है। उसकी जो एक्यूरेसी है कभी बहुत हाई आती है, कभी बहुत लो आती है, जिसको हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है। और सिलेक्शन बायस ये होता है कि इट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिलेक्शन ऑफ डेटा फॉर एनालिसिस इन सच अ वे दैट प्रॉपर रेंडमाइजेशन इज नॉट अचीव्ड एंड द सैंपल इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन इंटेंडेड टू बी एनालाइज्ड। तो ये उस वक्त आपके डेटा के अंदर आ रहा है जब आपने अपना डेटा गैदर, या तो पूरा डेटा ही गैदर किसी ऐसे तरीके से कर लिया कि जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं ओवरऑल पॉपुलेशन के। मिसाल के तौर पर आप बनाने निकले थे स्पैम फिल्टर, और आपने सारी ईमेल जो इकट्ठी की वो स्टूडेंट्स की कर ली। So now that spam filter would not generalize well to the overall population. एक बिजनेसमैन के लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक साइंटिस्ट के लिए, एक किसी और शख्स के लिए, वो वाला मॉडल जो आपने खाली एक लेट्स से लम्स के स्टूडेंट के ईमेल्स की बेस के ऊपर ट्रेन किया हुआ है, उसको जिस किस्म की स्पैम्स आती हैं, ये चीज़ ये नहीं जनरलाइज करेगी उन तमाम सिचुएशंस के ऊपर। ठीक है। सो दीज आर द गोल्स ऑफ दिस प्रेडिक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग टेस्ट का स्प्लिट जो करके हम करते हैं, एंड दिस गिव्स एन इंसाइट ऑन हाउ द मॉडल विल जनरलाइज टू एन इंडिपेंडेंट डेटा सेट। ऑल राइट, अब हम थोड़ी सी इस चीज़ की बात कर लेते हैं बायस और वेरिएंस की। ये दो
बहुत important factors हैं, बहुत important variables हैं हमारी machine learning के, जिनको समझना और इनको to get them right is very important. और I'll deal with them at a very superficial level at this point, लेकिन आपको सिर्फ इनकी basic समझ होना बहुत ज़रूरी है, even for doing the kind of machine learning that you will be doing as part of this course. So predictive models with a lower bias in parameter estimates have a high variance of the parameter estimates across samples and vice versa. अब इसका मतलब क्या है? Bias is an error from erroneous assumptions in the learning algorithm. High bias can cause an algorithm to miss the relevant relations between features and target outputs, which is known as underfitting. अच्छा, high bias का क्या मतलब है? आपने एक assumption की, आपके model ने जिसको आप use कर रहे हैं, because the estimators also have bias, and the bias can also come from the amount of training that you have, or the amount of training data that you've given your model. अच्छा, अब bias की मैं आपको एक दो examples देता हूँ. एक example है कि आपका model assume कर रहा है कि there is a linear relationship between your features like the bag of words and the outcome like the spam and not spam. So मैं कोई एक linear model train कर सकता हूँ for mapping like an equation of a line that maps between spam and not spam. यानी ये समझे कि कोई एक लीनियर लाइन है जिसमें एक कट ऑफ से आगे आगे सारी चीज़ें स्पैम है और कट ऑफ से नीचे नीचे सारी की चीज़ें नॉट स्पैम है, समथिंग लाइक दिस. यानी मैं एक पहले लीनियर मॉडल बनाऊंगा, फिर उस पर एक नॉन लीनियर कट ऑफ लगा दूंगा, कि एक थ्रेशोल्ड लगा दूंगा जिससे ऊपर की सारी चीज़ें स्पैम होंगी और नीचे की सारी चीज़ें नॉट स्पैम होंगी. नाउ that's an assumption about the data. It could be wrong, and if it is wrong, we will say that the model had bias in it. It assumed कि the relationship is linear. That was a very hard restriction, जिसकी वजह से now your model is not performing very well and it's not very well fitting to your data set. दूसरी एग्जांपल बायस की ये हो सकती है कि आपने अपने जो डेटा सेट आपके पास था, ट्रेनिंग डेटा था, वो इतना कम था कि you were not able to figure out or explore the true relationships between your features and the labels and the outputs. अब फॉर एग्जाम्पल आप, मैंने ये नीचे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि आप यू प्रोफाइल्ड फॉर एग्जाम्पल सम क्रिमिनल्स एंड इन द एंड यू केम अप विद अ रूल दैट एवरीवन विद अ बियर्ड इज सस्पिशियस. Now that model, हम तो इसको आम ज़बान में भी कहते हैं ना, it's biased, but it's also biased in the machine learning language, because the bias here is कि आपके पास जिस डेटा से आपने इस चीज़ को लर्न किया है, you have very learned a very crude rule. ये हो सकता है कि आपके ट्रेनिंग डेटा पे भी अच्छा परफॉर्म ना करे ये वाला मॉडल, ये टेस्ट तो छोड़ें, अनसीन तो छोड़ें, सीन डेटा पे भी शायद अच्छा परफॉर्म ना करे. सो दैट्स बेसिकली, एंड नाउ आई वांट यू टू पे अटेंशन, ये पहला सिम्टम होता है हाई बायस मॉडल्स का, कि व्हेन दे आर टेस्टेड इवन ऑन द ट्रेनिंग डेटा, आपका एरर बहुत हाई होता है. सो ऐसा मॉडल जिसको आपने ट्रेन किया और फिर ट्रेनिंग डेटा पे ही टेस्ट कर लिया, जानते बूझते कि मैं ट्रेनिंग डेटा पे टेस्ट कर रहा हूँ, and you will find that it will produce very high error. So we're going to say कि this is a high bias model. ठीक है. अच्छा, अब इवेंचुअली आप ट्रेन करते चले गए और आपका मॉडल बेहतर से बेहतर सीखता चला गया और वो मॉडल जो है फ्लेक्सिबल इनफ था, यहाँ तक कि आपकी ट्रेनिंग डेटा के ऊपर आपका एरर लो होता चला गया. इस दौरान में आप देखेंगे कि अनसीन डेटा के ऊपर भी आपका एरर इनिशियली लो होता चला जाएगा. एक पॉइंट आएगा जिसके बाद ये दोनों कर्व्स का जो आपस में दोस्ती है ना, ये खत्म हो जाएगी. सो ट्रेनिंग डेटा पे तो आपका एरर कम से कम होता चला जाएगा, लेकिन टेस्ट सेट के ऊपर, सो लेट मी बेसिकली ड्रॉ दिस. सो लेट्स से यहां मेरी ट्रेनिंग हो रही है और मैं सैंपल्स जितनों पर ट्रेन कर रहा हूं ये वो सैंपल्स हैं, या जितनी इटरेशंस ट्रेनिंग की कर रहा हूं ये वो इटरेशंस हैं. ये मेरा एरर है. And let's assume the red line is my error on the training data when I test the model on the training data, and this blue line is my error on the unseen test data. ये कहीं से मैं हर दफ़ा एक unseen test data ले आता हूँ, नई emails ले आता हूँ, कुछ और ले आता हूँ. जैसे जैसे मॉडल इनिशियली ट्रेन होता चला जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां तक दोनों ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा के ऊपर मेरा एरर जो है वो कम से कम होता जा रहा होगा. उस पॉइंट के बाद ट्रेनिंग डेटा पे जब मैं टेस्ट करूंगा तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते जाएंगे, लेकिन नए और अनसीन डेटा के ऊपर ये जनरलाइज करना बंद कर देगा. नए और अनसीन डेटा पे इसका एरर बढ़ना शुरू हो जाएगा. हम कहेंगे दिस इज द परफेक्ट स्वीट स्पॉट जिसकी हमें जरूरत थी. दिस इज द पॉइंट वेयर द मॉडल इज ट्रेन्ड जस्ट इनफ, इसने इतना सीख लिया है कि अब ये नए डेटा के ऊपर जनरलाइज भी कर सकता है और ट्रेनिंग डेटा के ऊपर भी गुड इनफ रिजल्ट्स दे रहा है. बियॉन्ड दिस इट इज गोइंग इनटू द ओवरफिटिंग डोमेन. बिफोर दिस इज अंडरफिटिंग. Beyond this is overfitting, and the sweet spot is where you have the lowest error on the training and the test data. So I hope this is making sense to you. अच्छा, अब
जब एक मॉडल की बायस बहुत लो हो जाए, यानी अगर हम इस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं पहुंच जाएं, यानी इस पूरे जोन में आप कहीं भी हैं और आपकी बायस बहुत लो हो चुकी है, मीनिंग आपने ट्रेनिंग डेटा को बहुत अच्छी तरह से जो है फिट कर लिया है, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर वो आप इतने लो में चले गए हैं कि आपके टेस्ट डेटा पर रिजल्ट्स बुरे आना शुरू हो गए हैं। तो इस बुरे आने का मतलब क्या होगा? योर परफॉर्मेंस वुड वेरी अ लॉट बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ टेस्ट डेटा। मैं एक नई ईमेल लाऊंगा, उस पर आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, एक और नई ईमेल लाऊंगा, उस पर रिजल्ट्स बहुत बुरे आएंगे, एक और लाऊंगा, उस पर दरमियाने आएंगे। वाई आर वी वेरिंग? जितनी आपकी ईमेल एग्जैक्टली वैसी होगी जैसा आपका ट्रेनिंग डेटा है, उतनी ही आपका जो है मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा। जितनी थोड़ी सी भी डिफरेंट होगी आपके ट्रेनिंग डेटा से, उतना मॉडल बुरा परफॉर्म करने लगेगा। So variance of is an error from sensitivity to small fluctuations in the training data. For example, कैपिटल से चाइनीज लिखा हुआ है तो अच्छे रिजल्ट दे रहा है, और स्मॉल से चाइनीज लिखा हुआ है तो वो लेट्स से बुरे रिजल्ट्स दे रहा है, समथिंग लाइक दिस। एक लेट्स से चाइनीज के बाद कॉमा डला हुआ है तो वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, और कॉमा नहीं डला हुआ तो बुरे रिजल्ट्स दे रहा है, इन लेट्स से आई डोंट नो सेंटिमेंट क्लासिफायर और समथिंग लाइक दैट। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके ट्रेनिंग डेटा के अंदर जहां भी चाइनीज लिखा हुआ था ज्यादातर जगह उसके बाद कॉमा डला हुआ था, लिहाजा द मॉडल लर्नड too many specific details of the training data and it became too well tuned to the training data. ठीक है? So variance is an error from sensitivity to small fluctuations in the training data. High variance can cause an algorithm to model the random noise in the training data rather than the intended outputs, जिस चीज को हम overfitting कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस चीज से इस तरफ आपके पास underfitting है और इस तरफ आपके पास overfitting है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये जो इसकी एक और मिसाल है, अंडर आपने हाई बायस की एग्जाम्पल देखी थी, एवरीवन विद अ बियर्ड इज सस्पिशियस, बिल्कुल ब्लंट सा रूल बता दिया था, जिस पे हो सकता है ट्रेनिंग डेटा पे भी अच्छा ना चलता जिन क्रिमिनल्स का आपके पास था, और या ट्रेनिंग डेटा था ही आपके पास 4 क्रिमिनल्स का और चारों की दाढ़ी थी, तो आपने कहा कि जी ये है। The overfitting is catch the bearded person with a mole on the right cheek and the left ear cut off. तो अब आपने इतना परफेक्टली अपने ट्रेनिंग डेटा, लेट से आपके ट्रेनिंग डेटा में 2 बंदे थे और दोनों इस पे पूरे उतरते थे, या एक था जिसमें पूरा उतरता था कि जी उसकी दाढ़ी भी थी और उसका जो है वो दाएं गाल के ऊपर एक मोल भी था और उसका जो है बायां कान भी कटा हुआ था, तो आपने कहा कि बस मुजरिम वो होता है जो इसके ऊपर पूरा उतरता है। तो नाउ दिस इज ऑब्वियसली, दिस वोंट जनरलाइज वेल टू न्यू डेटा। होपफुली अगर अगर दुनिया इतनी अच्छी होती कि इस डिस्क्रिप्शन वाले सारे लोग क्रिमिनल होते तो हम अब तक क्राइम सॉल्व कर चुके होते शायद। बट या आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये वाला है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि वी यूज नॉन ओवरलैपिंग ट्रेनिंग इन टेस्ट डेटा एंड देन वी ट्रेन एंड टेस्ट ऑन बोथ एंड देन वी फाइंड द स्वीट स्पॉट जहाँ पर हमारी बायस और वेरिएंस दोनों बैलेंस हो रही है। एक बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन देम। सो आइडियली वन वांट्स टू चूज अ मॉडल दैट both accurately captures the regularities in the training data but also generalizes well to unseen data. ऑल राइट जी, इस काम के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं। सो क्रॉस वैलिडेशन ओवर फिटिंग टू द ट्रेनिंग डेटा को बचाने के लिए होती है, और इसका एक फ़ायदा और ये भी होता है कि आप टेस्ट डेटा को सिर्फ ये नहीं है कि एक ही दफ़ा यूज़ हो सके, यू कैन एक्चुअली यूज़ इट मल्टीपल टाइम्स एंड यू कैन have multiple picks of test data in the same data set जो आपके पास है। इसमें हम करते क्या है, सिंपली बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा तो ये समझना इंतहाई आसान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं k फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन विद k इज इक्वल टू 4। ये आपका टोटल डेटा सेट है जो आपको यहाँ पे ये रेड और ग्रीन बॉल्स नजर आ रही हैं। लेट्स से इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, आपने रेड और ग्रीन क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन सम फीचर्स, और इसके अंदर आपकी टोटल डेटा सेट में आपने इनिशियली ये किया कि आपने इतनी चीज़ पे टेस्ट किया जबकि ट्रेन आपने इतनी चीज़ पर किया। सो लेट्स से 80% पे आपने ट्रेन किया और शुरू के पहले 20% पे आपने टेस्ट कर लिया। नाउ यू बेसिकली पूरे मॉडल को जीरो से दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट किया, पिछला सब कुछ थ्रो अवे कर दिया, बस रिजल्ट लिख लिया कि लेट्स से आपकी इसमें एक्यूरेसी कितनी आई थी या आपकी इसमें F1 कितनी आई थी, एंड देन यू गो टू इटरेशन 2 एंड नाउ यू रीट्रेन द होल मॉडल on this data and test on this data, and again you get the accuracy and your F1 from the iteration 1, from the iteration 2, and then similarly you do it for the iteration 3, जिसके अंदर आपने इस हिस्सा को टेस्ट बना दिया एंड फाइनली इस हिस्से को आपने टेस्ट बना दिया, लास्ट 1/4 को या लास्ट उतने हिस्से को जिसमें आप, यहाँ तो हम इक्वल हिस्सों को टेस्ट बना रहे थे। यस वी कैन डू इट दिस वे, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस, बट या दिस इज द सिंपलेस्ट वन। सो ये k फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है जिसमें 1/4 ऑफ द डेटा इन ईच इटरेशन इज योर टेस्ट डेटा। अगर हम 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर रहे होते तो 1/10 ऑफ द डेटा इन ईच इटरेशन इज योर टेस्ट डेटा। ठीक है,
इस टेस्ट डेटा, अब आप ये देख सकते हैं कि इन चारों इटरेशंस में टेस्ट डेटा जो है वो ओवरलैपिंग नहीं था, और आप टेस्ट डेटा को मॉडल को इंप्रूव करने में यूज नहीं कर रहे थे। आप फिर कर क्या रहे थे? आप इन चारों के थ्रू ये देखना चाह रहे थे कि मेरा मॉडल नए डेटा के ऊपर कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। और वो अब कैसे पता लगेगा? क्योंकि चारों इटरेशंस में मॉडल स्क्रैच से ट्रेन हुआ है। चारों इटरेशंस में मॉडल स्क्रैच से ट्रेन हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर इस टेस्ट डेटा से जो इसने सीखा था वो इसने यहाँ यूज़ किया, नहीं किया। उसने पूरे के पूरे अपने जो जितने भी लर्न की हुई चीज़ें थी वो ये ज़ाया कर दी, बस ये निकाल लिया उसने। और उसके बाद यहाँ उसने दोबारा हर चीज़ पूरा मॉडल ट्रेन किया और टेस्ट किया, फिर पूरा मॉडल ट्रेन किया और टेस्ट किया। एंड नाउ एन एवरेज ऑफ दीज एक्यूरेसीज और एवरेज ऑफ दिस F1 would give you the overall averages of the accuracy in F1 that you can expect on a new model. तो ये क्रॉस वैलिडेशन हम किस वक्त यूज़ करते हैं? इसको करने का एक जो हमारा जो मौका है, जो सिनेरियो है, वो ये है कि आपने अपना मॉडल ट्रेन कर लिया है। नाउ यू वांट टू फिगर आउट कि ये नए डेटा पे कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, और आपको डर ये है कि मैंने तो खाली 20% डेटा साइड पे रखा हुआ है, व्हाट इफ दैट 20% इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रियल वर्ल्ड? So you basically take your entire data set and then you start doing this cross validation, 10-fold, 5-fold, whatever. You do a cross validation, and cross validation में बार बार डेटा के मुख्तलिफ हिस्सों को आप टेस्ट डेटा बनाकर देख रहे हैं। तो डेटा में अगर कोई पैटर्न्स भी थे, कोई टेम्पोरल पैटर्न्स थे, किसी और किस्म के पैटर्न्स थे, कोई उसके अंदर एक शख्स की ईमेल्स पहले पढ़ी थी, दूसरे की बाद में पढ़ी थी, तीसरे की उसके बाद पढ़ी थी, तो नाउ all of that would have a chance of becoming test data in this calculation, and you will get the average accuracy across these test data sets, and your average F1 across these data sets, and so on and so forth. So this is cross validation. This is not the only use case for it. We use it in many places. It is actually a special case of a more general philosophy about treating the data. लेकिन खैर उस चीज़ का हमारे पास वक्त नहीं है, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे. Again, I would refer you to our lectures or someone else's lectures on cross validation and on training test data splits, जिसके अंदर फिर बहुत तफसील से इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है. If you're interested in watching our lectures, go to the machine learning lectures जो हमारे पिछले सेमेस्टर के हैं, and look at the ones where we were doing supervised learning setup. वहाँ पर इस चीज़ को हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया था. अच्छा जनाब, अब हम फाइनली आ जाते हैं उस मौजू की तरफ जिसको हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन उसकी एक आध खराबी देखने से रह गई थी, वो अब हम देख लेते हैं. सो डेटा स्पार्सिटी का प्रॉब्लम आपको याद होगा, दो किस्म के जीरोस थे, एक आउट ऑफ विकेबलरी वर्ड्स थे, उसको रहने दें. दूसरे जीरोस थे आपके जिसके अंदर हमारे पास विकेबलरी में वर्ड मौजूद है लेकिन हमारी उस क्लास में वो मौजूद नहीं है. ये चीज़ यूं भी होगी कि लेट्स से आपके पास उसका यूनिग्राम मौजूद है, यानी वोकैबुलरी में वर्ड मौजूद है, लेकिन आपके पास उसका लेट से बायग्राम नहीं है या ट्राइग्राम नहीं है, ये भी होगा. और आप देख सकते हैं कि स्पार्सिटी कितनी आएगी. फॉर एग्जांपल अगर शेक्सपियर का जो कॉर्पस है ओवरऑल वो इतने वर्ड्स का है, इतने टोकन्स का है, जिसकी वोकैबुलरी 29,066 वर्ड्स है, तो अगर मैं वी स्क्वेयर और वी क्यूब निकालूं, जितने पॉसिबल आपके पास इस मैट्रिक्स के अंदर बायग्राम्स हो सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ दीज वुड बी जीरोस. Obviously, most of these combinations have never been seen. So लिहाजा and this is what you see here, most of the things are zeros. ज़्यादातर entries जो हैं वो आपकी zeros हैं. Actual, by the way, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं जिसका मैं आपको जवाब ना दूं, let's assume मेरे number of tokens जो हैं वो हैं 10. I have 10 tokens. N is equal to 10. What would be the actual number of biograms in this text? एक टेक्स्ट है जिसमें 10 टोकन्स हैं, उसमें बायग्राम्स कितने होंगे, उसमें ट्राइग्राम्स कितने होंगे? एक तो है ना, मैं ये कहूँ आपको कि जी इसकी विकेबलरी वी जो है वो लेट से 7 है, तो इसमें बायग्राम्स हो सकते कितने? 7 × 7 49 हो सकते हैं. बट ऑब्वियसली ये 10 वर्ड का सेंटेंस है, इसमें 49 तो नहीं हो सकते ना, तो कितने हो सकते हैं? बायग्राम्स कितने होंगे, इसमें ट्राइग्राम्स कितने होंगे, इसमें यूनिग्राम्स कितने होंगे? चलें यूनि भी निकाल लें. यूनिग्राम्स कितने होंगे ये खुद ही करें, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत आसान है लिहाजा मैं सॉल्व नहीं करूंगा. बट व्हाट यू सी फ्रॉम हियर, वंस यू सॉल्व दिस, पॉज एंड सॉल्व एंड देन यू कम बैक एंड देन यू कैन क्लियरली सी कि मोस्ट ऑफ दीज पोटेंशियल बायग्राम्स एंड पोटेंशियल ट्राइग्राम्स वुड बी एम्प्टी, वुड बी जीरोस. तो इसका सोल्यूशन हमने क्या किया था? हमने इसका एड वन का सोल्यूशन किया था, एड वन स्मूथिंग या लप्लास स्मूथिंग. So this is the problem. इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा देख लें. आपके ट्रेनिंग सेट में फॉर एग्जांपल आपके पास कॉम्बिनेशंस आए थे, डिनाइड द एलिगेशंस, डिनाइड द रिपोर्ट्स, डिनाइड द क्लेम्स, डिनाइड द रिक्वेस्ट, और आपके टेस्ट सेट में आ गया डिनाइड द ऑफर एंड डिनाइड द लोन. ये वाले कॉम्बिनेशंस कभी भी हमने ट्रेनिंग डेटा में नहीं देखे. सो लिहाजा
the probability of such a combination comes out to be 0, which means that your model overfitted to the training data. इसके ख्याल में denied the offer possible ही नहीं है एक word होना, क्योंकि इसके ट्रेनिंग डेटा में ये चीज़ नहीं थी, ये ओवरफिट हुआ हुआ है, ये नए डेटा के ऊपर अच्छा जनरलाइज नहीं हो रहा. सो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने इनके काउंट्स को 1 कर दिया था जब हम देख रहे थे सिंपल नाइव बेस को. अब देखते हैं उसी चीज़ को आगे लगा रहे हैं यहाँ पर. So the problem here is that bigrams with zero probability mean that we assign zero probability to the test set. ठीक है, एक भी जीरो का आ गया तो पूरे टेस्ट सेट की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सब जीरो निकल आएगी. स्मूथिंग के अंदर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्मूथिंग है वो ये है कि a single zero count can make the whole probability measure zero. So similarly a small probability value can make the entire value non-significant. Thus we need to handle zero counts and small probabilities. अच्छा, ये वाली वो बात है जो किसी हद तक हमने डायरेक्टली डिस्कस नहीं की, हमने खाली एक्सप्लिसिट जीरोस की बात की है. पर व्हाट इफ कि हमने ऐसे इवेंट्स जो हमारे पास रेयर थे, वो हमारी कॉर्पस में रेयर थे ना, ज़रूरी तो नहीं है कि ओवरऑल भी वो रेयर ही हों, तो उनका भी मसला इसी तरह से ही स्मूथिंग के थ्रू सॉल्व किया जाता है. लेकिन अगेन मौजू बढ़ जाएगा तो इसलिए हम उसको बस मेंशन करके आगे बढ़ जाते हैं. So smoothing is a method which takes small probability values from higher probability words and distributes them to low या zero probability words. जैसे अभी आपने add 1 में भी इसी किस्म का काम किया है, but इतना explicitly नज़र नहीं आ रहा कि ये हुआ है. So it keeps the total probability less than or equal to 1, लेकिन redistribute कर देती है जो वर्ड्स अकर हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा थोड़ा सा उसमें से निकाल के माइनस करके दे देती है उनको जो कभी भी हमारे पास हमने एक्सपीरियंस नहीं किए वर्ड्स उस पर्टिकुलर मॉडल में या उस पर्टिकुलर क्लास में. फॉर एग्जाम्पल, हम अभी जो हमने एग्जाम्पल देखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनाइड द में एलिगेशंस 3 दफ़ा था, 2 दफ़ा रिपोर्ट्स था, 1 दफ़ा क्लेम्स था, 1 दफ़ा रिक्वेस्ट था, 7 टोटल थे. ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज़ थी. ये वो वर्ड्स थे लेट से जो हमारे पास नहीं मौजूद थे. ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारी इस क्लास में मौजूद नहीं थे, या ये वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास इनके बायोग्राम्स मौजूद नहीं थे, यानी या इस केस में हम ट्राईग्राम लिख रहे हैं तो ये वाले ट्राईग्राम्स मौजूद नहीं थे लेट से हमारे पास, हम ये एज्यूम कर लेते हैं. So what you want to do here is that you want to steal a little bit of probability mass from all of these, and then add this together and redistribute it over the words जो कि आपने कभी नहीं देखे हैं लेकिन जो अब आपके पास आ रहे हैं. ठीक है. So now you get the basic idea. In Laplace smoothing, in the add one smoothing, how do we handle that? So we pretend that we saw each word one more time than we actually did. जिस भी वर्ड की हम बात करें उसे हम समझते हैं कि हमने उसे एक दफ़ा ज़्यादा देखा हुआ जितनी दफ़ा हमने उसे देखा. So just add 1 to all the counts. However, to keep the ratio within 1, we also need to add to the denominator. So total count in the numerator is 1 plus 1 plus 1 v times. आपने पूरे जो है वो जितनी वोकैबुलरी है उतने ही आपने जो है वो वंस ऐड किए हैं न्यूमरेटर्स में ओवरऑल, तो लिहाजा टोटल डिनोमिनेटर में आप v ऐड कर देंगे. ठीक है. सो अगर आपका MLE एस्टिमेट ये था ऑफ द बायोग्राम्स, लेट से PMLE of WI given WI minus 1 was count of WI minus 1 WI divided by count of WI minus 1. तो add 1 estimate होगा probability add 1 of WI given WI minus 1 is count of WI minus 1 WI plus 1 and over the count of WI minus 1 plus V, जैसा कि अभी हमने एक एग्जाम्पल में भी देखा था. इसी तरह से ये बायोग्राम्स में होगा जैसे वहाँ पर हमने यूनिग्राम्स के लिए किया. All right, so these are your bigrams and these are your smooth bigrams. ठीक है. How do we go from relative frequency back to raw counts? ये भी कभी कभी हमें ज़रूरत होती है. हम देखना चाह रहे होते हैं कि जब हमने add 1 कर दिया है तो क्या हम वहाँ से अगर दोबारा काउंट्स में जाकर देखें तो कैन वी फिगर आउट कि ये कितनी दफ़ा अकर हुई होती ट्रेनिंग डेटा में, तो ये वाली इससे प्रोबेबिलिटीज़ आती. सो दैट्स बेसिकली अ वे ऑफ फाइंडिंग द एडजस्टेड काउंट्स. ये हम कैसे फाइंड कर रहे हैं? ये हम सिंपली इस तरह से फाइंड कर रहे हैं. आपके पास ये वाला रिलेशन है ना और ये वाला रिलेशन है, इन दोनों को आप इक्वेट कर दें, यानी इसको इसके अगेंस्ट इक्वेट कर दें. सो एसेंशली व्हाट यू आर गोना गेट इज C WN minus 1 WN over C WN minus 1 इज इक्वल टू, ये पहले का काउंट है और उसके बाद में आपने इसके साथ क्या किया है, बाद में आपने इसके साथ ये वाली चीज़ की है. सो दिस इज C of WN minus 1 WN and you added a 1 to it plus 1 over C of WN minus 1 plus V. इन दोनों को आपने इक्वेट किया. आपने कहा कि जी
मैं देखना चाहता हूँ कि बाद में ये काउंट्स कितने होते कि ये वाली प्रोबेबिलिटीज आती हैं जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये वाली प्रोबेबिलिटी आने के बाद वापस अगर काउंट्स पे जाएं तो क्या निकलते हैं। सो जस्ट टेक दिस टू द न्यूमरेटर, और वही आपने यहाँ पर किया है, यू जस्ट टुक इट टू द न्यूमरेटर एंड यू फाइंड द एडजस्टेड काउंट्स और द रिकॉन्स्टिट्यूटेड काउंट्स। सो दीज आर द, अभी हम इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं। सो दीज आर द काउंट्स, अगर ये हमने देखे होते तो ये वाली प्रोबेबिलिटीज आई होती। ये हम सिर्फ इसलिए देख रहे होते हैं जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ कि हमारी स्मूथिंग ने कितना चेंज किया है हमारी ओरिजिनल एमएलई के एस्टिमेट्स को। ऑलराइट, सो अगेन जो बात मैंने अभी की है ये वही चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। यू बेसिकली कंपेयर्ड द टू अक्रॉस एंड नाउ वी जस्ट फिगर आउट द प्रोबेबिलिटीज जो न्यू काउंट्स हैं जो इससे निकल रहे हैं। All right, so here you have the raw counts and these are the add one counts. ठीक है, so ये raw counts है, यहाँ हमने हर एक में add one कर दिया। 5 से 6 हो गया है, 827 से 828 हो गया है, 0 से 1 हो गया, and so on। ये add one counts है। ठीक है, अब इन add one counts को अब हम convert कर देते हैं new probabilities में। जहाँ जहाँ ये gray नज़र आ रहे हैं ना, ये original probabilities में 0 थे, जो कि अब थोड़ी थोड़ी सी इनको probability mass मिल गई है। And now we can go from here back to the counts। अब हमारा सवाल जो अभी अगर अब तक नहीं भी समझ आया ना, अब आपको समझ आ जाएगा। Now I want to create counts again, to recreate counts, जिसका मकसद ये है कि ये probability किस count से आई होती अगर हमने देखा होता। क्या काउंट हो तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी, क्या काउंट हो तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी। वी वांट टू एसेंशियली गो बैक टू द काउंट्स फ्रॉम दीज प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने में हमने वो डिनोमिनेटर को भी उसके अंदर भी वी ऐड किया था, सारा कुछ किया था ना, तो वी डोंट नो, दीज आर नॉट द एड वन काउंट्स जहाँ से चीज़ बन रही है, क्योंकि इसमें वी भी डिनोमिनेटर में लगा हुआ है। सो वी वांट टू गो बैक टू काउंट्स, सो लेट्स डू दैट। सो दीज आर द रिकॉन्स्टिट्यूटेड काउंट्स। ये आपके रॉ ओरिजिनल काउंट्स हैं जो आपकी कॉर्पस से हैं, जिसके अंदर जीरोस भी मौजूद हैं। उसके बाद आपने ऐड वन किया, ऐड वन के बाद आपने इनकी नई प्रोबेबिलिटीज निकाली, प्रोबेबिलिटी से वापस आप काउंट्स के अंदर आए। जब काउंट्स में आए हैं तो अब आपको नज़र आ रहा है कि मेरे ऐड वन करने से कितनी चेंजेस आई हैं। तो अब आप ज़रा देखें, 5 था रॉ काउंट, जो प्रोबेबिलिटी स्मूथिंग के बाद निकली है वो 3.8 है, मीनिंग कि हमने इतना बदला है इसको इसके ओरिजिनल से। लेट्स लुक एट दिस, 0 0.64 occurrences, 0 0.64 occurrences, 0 0.64 occurrences, 0 0.19 occurrences। ठीक है, however look at this, 827 527 occurrences, 608 238 occurrences। So this is basically a discount, and this is a ratio between the original the new count and the original count, and this is huge, this is very significant। इसका मतलब क्या है? What does it all mean? It means कि आपने जिन इवेंट्स के बारे में आप श्योर थे, जिनको आपने बहुत दफ़ा देखा था, उनको आपने कितना बदल दिया प्रोबेबिलिटी मैस उन वर्ड्स को देने के लिए जिनको आपने कभी नहीं देखा था। And as we see here, we changed them a lot. We were very confident about them, but we reduced our confidence quite a lot, and that is a problem of add one smoothing। कि add one smoothing के बाद जितने आपके पास जीरो ज़्यादा होंगे, जितनी आपके पास वोकैबुलरी बड़ी होगी और जितने जीरो ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट इवेंट्स को हर्ट करेंगे। इसको ज़रा दोबारा एक और तरह से देखते हैं। फर्ज कीजिए कि किसी एक रो के अंदर मेरे पास सिर्फ एक नॉन जीरो एंटिटी है, बाकी सब जीरोस हैं, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी एक को मिली हुई है, राइट। टोटल की जो प्रोबेबिलिटी है, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी पूरी रो की जो है वो किसी एक इवेंट के पास है। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से आई के बाद सिर्फ एम ही आ सकता है और बाकी जितने वर्ड्स हैं उन सब की जीरो अक्रेंसेस ही, लिहाजा जीरो प्रोबेबिलिटी है। जब हम इसको एड वन स्मूथिंग करेंगे तो आप इस प्रोबेबिलिटी में से कुछ मैथ्स चुरा के सारे वर्ड्स में बांट देंगे जितने वर्ड्स आपके पास आगे पड़े में। क्यों? क्योंकि आपने इस पे डिवाइड करके प्रोबेबिलिटीज निकाली है ना, तो लिहाजा यू टुक अवे, दिस वाज द वर्ड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यू took from that one small portions and divided them equally between all of the words which had zero counts। ठीक है, जबकि एक दूसरी एग्जांपल देखें, फर्ज करें किसी रो के अंदर सारे के सारे काउंट्स इक्वल हों। लेट्स से 5 अक्रेंसेज आई के बाद एम की हैं, 5 अक्रेंसेज आई के बाद ईट की हैं, 5 अक्रेंसेज आई के बाद फ्लां की हैं, एंड सो ऑन, सब 5 हैं। एंड नाउ आई डू एड वन स्मूथिंग, तो ये उसके बाद भी इक्वल ही रहेंगी, होगी अगर चेंज होंगी भी तो इक्वल रहेंगी, सब में कोई फर्क नहीं आएगा आपस में, रिलेटिव डिफरेंस नहीं चेंज होगा, नहीं बढ़ेगा।
सो लिहाजा व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर इज कि जितने ज़्यादा हमारे पास स्पार्सिटी है उतनी ही ज़्यादा एड वन स्मूथिंग प्रोबेबिलिटी मैथ्स चुरा कर फ्रॉम हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट्स लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स के ऊपर डिवाइड कर देगी, बांट देगी, ठीक है। सो अ हाई नंबर ऑफ जीरोस लीड टू अ हायर रिडक्शन इन प्रोपोर्शंस एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इवेंट्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो अब बस ये आपको प्रॉब्लम बताना था, इसके आगे इसके बहुत सॉल्यूशंस हैं। सो यू हैव योर विटन बेल डिस्काउंटिंग, यू हैव गुड ट्यूरिंग डिस्काउंटिंग, यू हैव नेसर ने डिस्काउंटिंग, एंड आई वुड रिकमेंड दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ डिस्कशन यू शुड बी रीडिंग ऑन दैट, बिकॉज ये रेगुलराइजेशन, डिस्काउंटिंग, स्मूथिंग का जो मौजू है ये बहुत डिटेल्ड मौजू है, ये इतनी जल्दी ये कवर नहीं हम कर सकते। यहाँ सिर्फ समझाना है, मकसद था आपको पता हो कि इन जीरोस की वजह से क्या रिपरकशंस हैं, इनको जो सॉल्व करने के तरीके हैं उनकी क्या आउटकम्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हम कंक्लूड क्या किया हमने कि एड वन स्मूथिंग इजंट यूज्ड फॉर एनग्राम्स, यूजुअली हम इससे बेहतर चीजें यूज करते हैं, बट एड वन स्मूथिंग इज यूज्ड टू स्मूथ अदर एनएलपी मॉडल्स लाइक फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या इन डोमेन्स वेयर द नंबर ऑफ जीरोस इजंट सो ह्यूज। सो हमारी जहां मैट्रिसेस डेंस होती हैं वहां हमें कोई मसला नहीं। अगर हम एड वन की जगह ऐड के भी करें वेयर के इज लाइक ग्रेटर देन वन और लेस देन वन, बिटवीन 0 and 1, इवन देन यू हैव सिमिलर इश्यूज, वो उससे मसला सॉल्व नहीं होता। ऑलराइट जी, इस मौजू को हम यहीं पर अब रोकते हैं। हम इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं कि तकरीबन HMM को समझने के लिए जितने प्रीरेक्स थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। सो नाउ वी आर रेडी टू गो बैक टू हिडन मार्कओव मॉडल्स एंड नाउ स्टार्ट लुकिंग एट देम इन सम डिटेल एंड टू फिगर आउट कि किस तरह से हम सीक्वेंसेस को दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, दो सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी अलाइनमेंट बिटवीन टू सीक्वेंसेस, and then how can we solve the general problem of speech recognition using hidden Markov models. So हमारा गोल वहाँ पर भी वही होगा, पाथवे वही होगा कि हम इसको दो स्टेप में करेंगे। पहले acoustic modeling करेंगे, the goal of which is to go from the audio waveform to a set of phonemes or set of phones जो आपने identify किए हैं, and then from the set of phones we will create a set of words, and उन words के ऊपर language model लगेगा जो कि एक किसी कॉर्पस से आ रहा होगा, और वो लैंग्वेज मॉडल हमारे एक तरह से इस्त्री कर देगा हमारी आउटकम के ऊपर, और कम प्रोबेबल सेंटेंसेस को रिमूव करके हायर प्रोबेबल सेंटेंसेस को हायर वेट दे के सिलेक्ट कर लेगा। दैट्स द जनरल प्रोसेस ऑफ स्पीच रिकग्निशन। इंशाल्लाह लेट्स डू ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।